Good morning, students. I am Komal Goyal, your English teacher. Today, I will explain you the sentence. So first, I would like to tell you about what is sentence. A sentence is a group of words which makes a meaningful or complete sense. बच्चों, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल, read the following sentences. A cricket I have kit. Dancing is the girl. Students, can you identify what is wrong with these sentences? Yes, improper arrangement of words. And that's why these group of words make no sense. Now read the correct order of words. I have a cricket kit. The girl is dancing. So what we see? Yes, proper arrangement of words make a meaningful sentence. बच्चों, इस वाक्य में जो भी वर्ड्स थे वो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं थे. सो दैट इज नॉट अ सेंटेंस. बट इन वाक्य में जो भी वर्ड्स थे वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे हुए थे. दैट इज देयर इज अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ दीज वर्ड्स. सो these are sentences. A sentences start with a capital letter and usual ends with full stop or question mark. Okay students, so let's read about kinds of sentences. Now students, there are 4 type of sentences. First, question. Second, commands. Third, statement. And fourth, exclamation. Students, question. A sentence that is used to ask a question is called question sentences. It ends with question mark. Okay. These are also called interrogative sentences. Example, where is my book? बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है. ये सेंटेंस ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एग्जाम्पल, वेयर इज माई बुक? मेरी बुक कहाँ है? ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. इस क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. इसके मेन कीवर्ड्स हु, व्हाट, हाउ, व्हाई एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज कमांड्स. A sentences that gives a command, advice or request is called command sentences. ऐसे sentences जो कि हमको कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट देते हैं उसको हम लोग कमांड सेंटेंसेस कहते हैं. These are also called imperative sentences. इनको हम लोग imperative sentences भी कहते हैं. It ends with full stop or exclamation sign. For example, please give me your book. कृपया मुझे अपनी बुक दो. तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गिव मी योर बुक. सो दैट इज imperative or command sentence. Next one is statement. These are also called assertive sentences. They are simple sentences. That a sentence that says or state something is called statement. They always end with full stop. For example, Ram was playing. राम खेल रहा था. राम खेल रहा था. तो वह ये बता रहा है कि राम खेल रहा था. So that is statement. And the student, next one is exclamation.
exclamation sentences. A sentences that express a strong feeling is called exclamatory sentences. Exclamation sentences is also called exclamatory sentences. बच्चों इस तरह के sentences में एक strong feeling बताई जाती है. Mostly in the beginning of these sentences, wow, oh, hey, these words are also used at the beginning, and there is a important sign, that is exclamatory sign. This sign is called exclamatory sign. For example, wow, it's a beautiful watch. वाह कितनी सुंदर वॉच है. बच्चों इस सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग समझ में आ रही है, खुशी, एक प्लेजर समझ में आ रहा है. वाओ, सो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज हे, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दिस इज. इट्स एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. हे, ये कितना अच्छा आइडिया है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सक्लेमेटरी sentences. I hope you all of you understood. Jai Hind.